Hi everyone, I hope you all are doing good, and today we are here to learn about fractions and decimal, and in that today we will be studying multiplication of fractions and division of fractions. Alright, so let's get started. So, I have told you about fractions and how to compare them in the previous session. I hope you all remember it. So, now let's start. Today we will be studying multiplication of fraction, division of fraction, reciprocal of fraction, multiplicative and additive inverse. So, a little you may know from your previous knowledge, but we are going to learn it completely today. So, this is the warm up for fraction and decimal. So, this is your first question. Categorize the number. So you have to categorize all these numbers among integers, fractions, decimal numbers, whole numbers, like that. So what do you think what this 12 is? 12. So 12, you can say it is an integer, a whole number, and a natural number. Okay, it is not a fraction or not a decimal number. It is a whole number, natural number, or you can say a positive integer. Next one is minus 4. Minus 4 is a negative integer. 1 upon 3, 1 upon 3, or you can say 1/3. 1/3 होता है आपका fraction, as I have told you in the previous session. This is what we call a fraction. Now 0.7 is a decimal number because you can see a decimal point in between 0 and 7. 30 again is like 12. This is an integer, a positive integer, natural number, and a whole number also, you can say. Now minus 5 is like minus 4, so it is a negative integer. All right, now let's come to question number 2. Perform the operation and verify the result. So 108 minus 56. This is quite easy for the students of 7th. It is quite easy. You just have to do the subtraction simply. So 108 minus 56 would be 52. Yes, that will be 52. Now this one you all can do all these questions all by yourself because these are simple division, multiplication, addition, and subtraction. Now the third one is write 5 multiples of 10. So what are 5 multiples of 10? That is quite easy. It can be 10. Next one is 20, 30, 40, and 50. This is quite easy, and you can also go on. That will be 70, 80. All those numbers which have 0 in the ones place are the multiples of 10. Okay, so now let's move on to this is a simple warm up. We have just warmed up to prepare ourselves to do the multiplication of decimals and fractions. So we will just be understanding the multiplication of fraction only, multiplication and division of fraction only. We will do decimal in our next session. Okay, so first one is multiplication of fractions. So multiplication of a fraction with whole number first. You can multiply the fraction by a whole number, or either you can simply multiply two fractions. So first we will be understanding the multiplication of a fraction with a whole number. So you all know about fractions, you all know about whole numbers. क्या होते हैं whole numbers? Whole numbers are the natural numbers including 0. So we have to multiply a fraction by a whole number. So how do we do that?
To multiply a fraction with a whole number, we multiply whole number by the numerator, keeping the denominator same. So what have you understood from this? To multiply a fraction with a whole number, फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए वी मल्टीप्लाई होल नंबर बाय द न्यूमरेटर. हमें होल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? न्यूमरेटर से. कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम. और डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम रहता है. सो यू कैन सी एन एग्जाम्पल. दिस इज 2/6 मल्टीप्लाई 5. 2/6 multiply 5. So as I have told you here in this statement, we have to multiply the whole number by the numerator. Numerator क्या है इस fraction का? Numerator है 2. The one which is on the top is called numerator and the one which is at the bottom is called denominator. So 2 is the numerator. So we have to multiply this 5 by this 2. So 2 times 5 is 10 and 6 remains the same as said in this statement. The denominator remains the same. Okay. So 2/6 multiply 5 is 10/6. Okay. And we can also further get this in a more simpler form by dividing both the numerator and denominator by 2. So if you divide 10 by 2 you will get 5 and if you divide 6 by 2 you will get 3. So you can also get this into a simpler form जो आपको मिल जाएगी 5/3. So let me show you this here. Let's say we have this. So we have this. Let me do this here. हमें 10/6 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है. तो हम क्या करेंगे? हम 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से एंड देन वी विल ऑल्सो डिवाइड and then we will also divide 6 by 2 because 6 is a common factor of both because 2 is a common factor of both 10 and 6. तो हम एक कॉमन फैक्टर से दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे टू गेट दिस इनटू अ सिंपलर फॉर्म. Okay, so 10 divided by 2 is 5 and 6 divided by 2 is 3. So 10/6 को हमने इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और वो जो फ्रैक्शन हमें मिला है वो है 5/3. So 5/3 is the answer of the question we had here in the simplest form. Now let's take another example of how to multiply the fraction by whole number. So let's take one more example. So the next example we have is, let's say we have to create a question by ourselves. Let's say we have 6/7. Okay, we have 6/7 and we have to multiply this by, let's say we have to multiply this by 2. Okay, so as we know that we only have to multiply the whole number by the numerator and the denominator remains the same. तो हमें सिर्फ अपने न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर सेम रहेगा. तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है 6
and we have to multiply this by 2 and the denominator remains the same. So जो 7 है denominator वो हमारा same ही रहेगा. So 6 multiplied 2 is 12 and denominator will be 7 as it is. Okay, so we have solved one more example here. Let's say one more example. Okay, let's say we have 3 by 5 and we have to multiply this by let's say 10. So if I multiply 3 by 5 by 10, I have to again multiply the numerator by the whole number. I have to multiply the numerator by the whole number. So the numerator is 3, the whole number is 10, and I am going to put this in a bracket so that you don't get confused. And the numerator is 5, the denominator is 5, which will remain the same. So 10 multiplied 3 is 30 divided by 5 upon 5, sorry. So now do you see that both of these 30 and 5, the numerator and denominator, both of these are do you think both of these are the common multiple of something? क्या ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी एक ही नंबर के टाइम्स टेबल में आते हैं? Yes, they both come in the times table of 5. 5 is a common factor to both of them. So we can convert this into a simpler form. So we can divide both of them by 5 to get this into a simpler form. To simplify it, we can divide both the numerator and denominator by 5. So when we divide 30 by 5, we will get, what do we get? We get 6. And when we divide 5 by 5, we get 1. And 1 in the denominator doesn't make any difference. You can simply write this as 6. 6 upon 1 और 6 एक ही होते हैं. अगर denominator में 1 है तो it is not mandatory to write it. You can just skip writing this 1 in the denominator. Alright, so 6 upon 1 is equal to 6. Okay, so it is always good if you get your answer in the simplest form always. Okay, so now let's move on to the next slide. Now the next one is multiplication of a fraction by a fraction. Multiplication of a fraction by a fraction. Alright, so how do you multiply the fraction by a fraction? So there are 3 simple steps to multiply fraction. Multiply the top numbers, the numerators, multiply the bottom numbers, the denominators, simplify the fraction if needed. So what does it mean? Multiply the top numbers. So if we have 2 fraction, अगर हमारे पास 2 fractions है तो obviously हमारे पास 2 numerator होंगे और 2 ही denominator होंगे. इसी तरह से
हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो आएगा उसको सिंप्लीफाई करके हमारा फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा. ओके, लेट्स लर्न इट विद एन एग्जाम्पल. 1/2 multiply 3/7. 1/2 multiply 3/7. So these are the two fractions we have. So in this I have this numerator and denominator. In this as well I have this numerator and denominator. इसमें numerator क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 numerator है और denominator क्या है, 7. So the step 1 is multiply the top number, that is numerator of both fractions. So क्या करना पड़ेगा, हमें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 को 3 से और 2 को 7 से. मल्टीप्लाई द बॉटम डिनोमिनेटर नंबर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस. अगेन द सेम थिंग, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2/7. सो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 3/14, बिकॉज 3 multiply 1 is 3 and 7 multiply 2 is 14. Now let me show you this with again an example. Okay, so let's say we have this example in here, 2/3, and we have to multiply this by 4/5. So we know the rule, right? The rule is we have to multiply the denominator by the denominator and numerator by the numerator. So 2 is the numerator of the first fraction and 4 is the numerator of the second fraction. So I have to multiply 2 by 4 first. Okay, then upon, now the denominator of first fraction is 3 and the denominator of second fraction is 5. So 4 multiplied 2 is 8 and 5 multiplied 3 is 15. So what I have got is 8/15. So isn't it easy? Easy है, right? Now let's take one more example. Let's say we have 3/5 multiply 15/9. Let's say we have this fraction. Now again the same thing, denominator by numerator multiply numerator. 3 multiply 15 divided upon 5 multiply 9. ओके, सो क्या आएगा हमारे पास, 15 multiply 3 is 45, isn't it? And 5 multiply 9 is again, what is it? Isn't it 45 again? So what have we got? We have got 45/45. So 45 and 45 both have a common factor, right? And it is 45. So we can divide both the numerator and denominator by 45 and we will get 1. Okay, this is what we call the simplification. So हमने, like in this we were told, first we have to multiply the top numbers, then the bottom numbers, and then we simplify the fraction if needed, and this is what we have done in here. Okay, so students, all this that you are learning here, you can also practice this on our website, which is just tutor.com. I can show it to you.
ये है हमारी वेबसाइट justtutor.com. You can get a lot of free material here. You can test your knowledge here in this. You will get the content for maths, science and English. Also you can first you can test your knowledge. Let's say we have this class 4 का हमें कुछ सीखना है, हमें कोई अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है, तो वी कैन गो ऑन दिस. ओके, सो ये हमारे पास कुछ आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे. आप यहाँ पर सिंपली जाकर ये क्वेश्चंस एक्सेस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं. See, here are the questions. You will get 10 questions. The time will be there. In how much time you solve the question. Okay. Also, you have the worksheets. Let's say we have to see the class 8th worksheet. इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. And this is absolutely free for you. Let's say we have to find out the cube. So इसमें आपके सब टॉपिक्स भी रहेंगे. सम पैटर्न्स ऑफ क्यूब लेट्स से, और यहाँ पर मिल जाती है आपको पूरी वर्कशीट. ओके, सो दिस इज़ द वर्कशीट दैट यू विल गेट. You can test your knowledge and we have a lot of free material also, the textbook solutions, the exemplar solutions, the video lessons as well. आपके पास ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा. Okay, let's say you have to go to the CBSE material class 7th जो हम पढ़ रहे हैं अभी. Let's say we have to go to this and हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं fractions and decimals. So हम वही देखेंगे अपना टॉपिक, और अभी हम पढ़ रहे हैं multiplication of fraction. Okay, so this, okay, we have the worksheet here. See, we have a worksheet of 20 questions. Okay, here are the test yourself for class 7th and the study notes as well, the learning videos. See, we have everything, so you can access all these materials on our website justtutors.com, and this is absolutely free for you to help yourself. All right, okay, so now let's move on to the session now. So we have learned how to multiply a fraction by a fraction. So यहाँ पर हमारे पास लिखा है try to find 2/5 of 1/5. So ये जो ऑफ होता है इसका क्या मतलब होता है? ऑफ, so off is nothing, it means you have to multiply. Okay, अगर आपके पास क्वेश्चन है 1/2 of 8, so what you have to do is you have to just multiply 1/2 by 8. Okay, so again we have to follow the same process, which is multiply the whole number by the numerator of the fraction and denominator remains the same. 8 multiply 1 upon 2. Okay, so ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 upon 2, and you know 8 upon 2 is 4. Okay, 8 upon 2 is 4. इसी तरह से अगर हमें फ्रैक्शन, हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं, लेट्स से वी हैव 1/2 of 6/7, 6/7. यहाँ पर भी हमें क्या करना है? फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है. 1 ऑफ हटा देंगे और मल्टीप्लिकेशन साइन लगा देंगे. ओके, सो दिस इज 6/7. Alright, and again we have to follow the same process, which is multiply the numerators and multiply the denominators. Okay, so 1 multiplies 6 upon 2 multiply 7.
Alright, so this is 6 upon 2 sevens are 40. ओके और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि 6 और 14 दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो आप इसको 2 से दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3 एंड 14 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 7. सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ this will be 3 upon 7. So 1/2 of 6/7 is 3 upon 7. Okay, so this is how you can solve the questions जहाँ पर आपके पास ये ऑफ वाले questions आएंगे. Okay, so now let's move on to the next slide, and here we have the division of fraction. So division we have learned multiplication. अब बारी आती है division की. So there are 3 simple steps to divide a fraction by another. पहली बात है हमें एक फ्रैक्शन को ही एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना है. ओके और आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है या फिर आपको एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना है. यू कैन हैव 3 केसेस where you have to first is where you have to divide a fraction by a fraction. Second one is where you have to divide a whole number by a fraction. Third one is where you have to divide a whole number by a fraction or fraction by a whole number. Okay, so first one is where you have to divide a fraction by the another. Flip the second fraction, the one you want to divide by, upside down. This is now a reciprocal. Multiply the first fraction by that reciprocal, simplify the fraction. So इसके लिए ना हमें सबसे पहले रेसिप्रोकल जानना पड़ेगा. रेसिप्रोकल क्या होता है? तो इसके पहले rather than learning division we will first understand what reciprocal is. To get the reciprocal of a fraction, just turn it upside down. In other words, swap over the numerator and the denominator. So, reciprocal, किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है. इट इज़ वेरी ईजी. आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए. इट इज़ कॉल्ड द रेसिप्रोकल. Also, you must know when we multiply a fraction by its reciprocal, we get 1. So, it is like the multiplicative inverse. जैसे हमने इंटीजर्स के लिए भी पढ़ा था. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स होता है जिसमें अगर इफ़ यू वांट एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर a, you have to add such number to it जिससे आपको क्या मिल जाए? 1 मिल जाए. 0 मिल जाए. ओके, वो होता है एडिटिव इन्वर्स. और उसमें वो क्या होता था? वो होता था उसी नंबर का नेगेटिव. फॉर a इट इज़ -a. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है? आपको ऐसा एक फ्रैक्शन के लिए एक ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 मिले. ओके, सो वो करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है? हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना होता है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना होता है. ओके, सो लेट्स से वी हैव दिस फ्रैक्शन 3 अपॉन 8. तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर क्या है? 8. सो हमने क्या किया? रेसिप्रोकल के लिए हमने 8 को न्यूमरेटर बना दिया और 3 को डिनोमिनेटर. सो द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 3 अपॉन 8 इज़ 8 अपॉन 3. सिमिलरली 1 अपॉन 3 के लिए क्या होता है? 3 अपॉन 1. और 2 अपॉन 5 के लिए क्या होगा? 5 अपॉन 2. अब आप सोचेंगे कि ओके, इफ़ आई हैव टू डू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर 4 का रेसिप्रोकल मैं कैसे करूँगी? सो 4 का रेसिप्रोकल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू, क्योंकि हमें पता होता है हमारे हर नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है. हर नेचुरल नंबर और होल नंबर, इवन
हर इंटीजर का जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है, बस हम उसको लिखते नहीं हैं. ओके, सो अगर हमें इसका रेसिप्रोकल करना है तो वो हो जाएगा 1/4. ओके, 4 का अगर आपको रेसिप्रोकल जानना है तो वो हो जाएगा 1/4. अगर आपको 8 का रेसिप्रोकल चाहिए तो वो हो जाएगा 1/8. अगर आपको 9 का रेसिप्रोकल जानना है तो वो हो जाएगा 1/9. ओके, सो आई होप द रेसिप्रोकल इज अंडरस्टूड. नाउ so to reciprocal of a fraction is also known as multiplicative inverse of the fraction. To get the additive inverse of a fraction, just reverse the sign of the fraction. अगर आपको एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिटिव इन्वर्स के लिए जैसे हम नॉर्मली इंटीजर्स में करते थे, अगर a है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा. इसी तरह से हमें अपने फ्रैक्शन का सिर्फ साइन चेंज करना है. तो जैसे 3/8 है, ये हो जाएगा -3/8. ओके, एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस फ्रैक्शन. ऑलराइट, नाउ लेट्स लर्न अबाउट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. सो अगर हमें एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा? जिस फ्रैक्शन से आप डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब जो आपका डिवाइज़र है उसको आपने सिर्फ क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल करना है. और रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा? जो डिवीजन साइन होगा उनके बीच में वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड देन यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है. सो just take this with an example, just learn this with an example. So let's say we have okay, something is wrong with this example. Let me show you here. Here, let's say I have to divide 5/3. Division sign here, and I have to divide this by 7/8, let's say. तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 5/3 और 7/8. ओके, आई हैव दीज टू फ्रैक्शंस. नाउ क्या करना है हमें डिवाइज़र, हमारा डिवाइज़र कौन सा है? हम किस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं? 7/8 से, राइट? हम 7/8 से 5/3 को डिवाइड कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है? हमें 7/8 का रेसिप्रोकल लेना है. सो व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 7/8? we just have to interchange the denominator and the numerator. तो हमारा जो रेसिप्रोकल होगा इसका वो हो जाएगा 8/7. Okay, and see what I have done is I have changed this division sign into the multiplication one here. You can see it. जब मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो मैंने जो डिवीजन साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया. ओके, एंड नाउ यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू. 5 multiply 8 and 3 multiply 7. So 5 multiply 8 is 40 and 7 multiply 3 is 21. So 5/3 divided by 7/8 is 40/21. Okay, is that clear to everyone? Now we can also have one more case where we have to divide. How would you divide a fraction by a whole number? आप एक whole number से कैसे divide करोगे एक fraction को? That is quite easy. I have told you the multiplicative inverse of whole numbers as well. So हम क्या करेंगे? We just have to let's say I have this question.
3/7 को मुझे डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है लेट्स से 8 से, मुझे इसे डिवाइड करना है 8 से। तो मैंने आपको बताया है कि डिवाइज़र का रेसिप्रोकल करना होता है बस। ओके, सो व्हाट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 8? Reciprocal of 8 is, as I told you, is 1/8. Now 3/7 is 3/7 multiply 1/8। बस मैंने क्या किया, मैंने 8 का रेसिप्रोकल लिया विच इज़ 1/8 और डिवीजन साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। अब हम इसको सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने दो फ्रैक्शंस को, हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 × 1 अपॉन 7 × 8 which is equal 3/56। All right, so this is your answer। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक होल नंबर को भी फ्रैक्शन से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से आई हैव टू डिवाइड 5 बाय 5 को हमें डिवाइड करना है 6/7 से। मुझे 5 को 6/7 से डिवाइड करना है। तो मुझे क्या करना होगा, आई विल ओनली हैव टू डू द रेसिप्रोकल ऑफ 6/7 and to change the division sign into the multiplication one। So multiply करने के बाद क्या आ जाएगा, 7/6 and it is again a multiplication of fraction by a whole number। और मैं उसी तरह से इसको कर दूँगी which is 5 × 7 and the denominator remains the same। Okay, so the denominator remains the same and it is equal 5 times 7 is 35। 35/6 is our answer। Okay, so I hope this is clear to everyone। Now I have told you all three kind of divisions of fraction। सो व्हाट आई हैव हियर इज़, हमने रेसिप्रोकल भी पढ़ लिया है, हमने एडिटिव इनवर्स भी पढ़ लिया है, हमने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिया है, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन भी पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रैक्टिस टाइम। और प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज क्विकली। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। 4/9 divided by 5। So what is this an example of? मैंने अभी अभी आपको बताया है ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को किससे डिवाइड किया गया है, होल नंबर से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 4/9 तो ऐसे ही रहेगा और हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें इसी का ही रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इट इज़ 1/5। सो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो डिवीजन साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ओके, डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और हमारे पास जो क्वेश्चन अब हो जाएगा वो हो जाएगा 4/9 × 1/5 विच विल बी 4/45। ओके, सेम थिंग वी हैव टू डू विद दिस क्वेश्चन एंड दिस वन। ये जो चारों क्वेश्चंस है ये एक ही तरह के हैं और दूसरे में भी यही क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। अब हमें इनका रेसिप्रोकल चाहिए। तो आपको पता है कि 4/9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/4। क्या करना है हमें सिर्फ इंटरचेंज करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। तो जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 9 वो बन जाएगा न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो द रेसिप्रोकल ऑफ 4/9 वुड बी 9/4। अगेन फॉर 5/6 it will be 6/5। Now the fourth question we have is
Mom left 1/3 of a pie for Rohit to eat, but since he was not very hungry, he only ate 1/5 of 1/5 of what was there. What part of a whole pie did Rohit eat? तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें हमें 1/5 चाहिए 1/3 का, क्योंकि हमारा जो फ़िलहाल जो होल है वो है 1/3, क्योंकि 1/3 छोड़ा था, और 1/3 का भी कितना खाया है रोहित ने, 1/5, तो हमें 1/5 ऑफ 1/3 चाहिए, और ऑफ को हटा के हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 इज़ 1 एंड 3 × 5 इज़ 15, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1/15. ओके, now the last example is on a map 3/4 of an inch represents 60 miles. How many miles does 2 inches represent? On a map, एक मैप है हमारे पास, उसका जो 3/4 इंच है वो रिप्रेजेंट करता है 60 माइल्स को. अब हमें चाहिए कि 2 इंचज़, how many miles does 2 inches represent? So what we can do is we can हम क्या कर सकते हैं, हम 3/4 हम क्या कर सकते हैं, 3/4 ऑफ एन इंच इज, इट मीन्स 3/4 of 1 is 60 miles. 3/4 of 1 is 60 miles. I think there is something wrong with this question. Okay, so we will take this question in our next session, and in our next session we will also learn about learn about decimals and how to multiply and divide them as well. So I hope you really liked the session and you understood what I have told you. So you can subscribe the channel for more sessions, and you can also share it with your friends, and you can also like the video, and you can also, once again I am telling you, you can visit our website justtutors.com to get free study material. All right, so that is all for today, and I'm gonna meet you I think the day after tomorrow for the science class. So till then, take care of your